proposals to build a mechanism to interact throughout the year. Thank you very much for your insights. We are going to now have a quick presentation delivered by two of ACCA's members who also attended ACCA's flagship six-digit program. The presentation is an overview of the key changes and reforms in the Punjab Finance Act 2020-21, and the presentation will begin with Mr. Sikandar Ishtiaq opening that for ACCA, and halfway through, just before we are starting to discuss the schedules and some changes with regard to the construction sector, Hafiz Suleiman would then take over from Mr. Sikandar Ishtiaq. So over to you, Sikandar. Please start your presentation. Thank you, Umar. I will just first share slides. So I will just give you brief on Punjab Finance Act 2020-21. I will just quickly go through the main amendments introduced in the bill. The main highlights of the bill were the core dimension of the bill remains the social welfare and expenditure control. The government has focused on development of people and the strategies to effectively manage the cost in the current ongoing pandemic situation. There were unprecedented amendments were introduced to provide financial relief to the taxpayers. As you know, the good thing remains the health and education sector remains the top priority sectors. The total outlay of the budget remained 2.24 trillion. Despite the current pandemic situation, the government has provided a handsome amount of 337 billion for development, and special COVID relief package of 56 billion were provided. These were the main highlights of it. Now, quickly going over the main sections amendments proposed. In section 16, the main aim of the bill remains the rationalization of input tax adjustment. In section 16.2, previously there was not clarity regarding the time frame for to claim adjustment of inputs. Up इस फाइनेंस एक्ट में गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम एडजस्टमेंट ऑन टैक्स इनवॉइसेस और डिक्लेरेशन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स नॉट ओल्डर देन 6 months. The goods of imports, the invoices should bear the name of the taxpayer and the NTN number. और आपने किसी भी चाहे फेडरल में चाहे किसी प्रोविंशियल सेल टैक्स में आपने इनपुट क्लेम किया हो तो आप 6 months के अंदर आप उसको एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं. Under section 16C, taxpayer can adjust 80% of the input tax against its output tax. Just like the Finance Act of Federal 1990, वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि अमेंडमेंट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है टैक्स पेयर 90% ऑफ इनपुट अगर अपना एडजस्ट करवा सकता है. In line with that, the Punjab has also introduced in Finance Act, now the taxpayer can adjust 80% of the input against its output tax. With every law, there is exception. PRA hold the right to exclude any person or class of person from the above relief as provided in section 16.2. New section 16D has been inserted in finance bill where the PRA and its officers are empowered to entertain the application of refunds and they can grant the refund to registered taxpayer. However, this refund should only be based on unintentional error or misconstructions. Regarding deregistration, the PRA has transferred its authority to commissioners in relation to deregistration of the service providers. This will, decrease the timeliness and improve the efficiency of the operations. Regarding audit proceeding regarding current pandemic situation, I think and to maintain the social distancing concept, the authorized officers are empowered to conduct audit proceeding electronically through video links or any other facility as may be notified by the PRA. There is a new concept of audit cum risk compliance officer were introduced in section 39. The role of audit compliance and risk compliance functions are merged under one officer known as audit cum risk compliance officer. This will enhance the audit selection process as now the PRA will
be more focused on risk-based selection of our audits. There will be no random basis for selection of audit. I think this is the very positive change introduced in the section. Regarding appeals, now the appeals can also be filed electronically with commissioners as specified by the PRA notification. Regarding recovery of areas of tax, now the PRA officers are empowered to make recoveries from running finance or demand finance facility by the banking company of the taxpayers. If the appellate tribunal has adjudged the amount, then the officer may also arrest or cause to arrest the defaulter and detain him in prison for up to a period of 6 months. However, if the taxpayer has preferred to deposit the amount equal to 10% of the penalty, then no recovery will be made through attachment of immovable property. The main amendment was that the last year this limit was 25%, now it was reduced to 10%. Regarding record section 31, a very elaborative list of documents and list has been provided by in the Finance Act. Now I have just briefly summarized the previous amendment and now the new amendments proposed in the Finance Act. Now the records of all exempt supplies, goods and services indicating their quantity and value should also be maintained. Previously only with such detail only the taxable services details has been maintained. Now we have to maintain the exempt services details also, along with double entry accounts, bank statement, other inventory records, and any other record deemed necessary by the PRA. Now going forward, on second schedule from onward, I will hand over to Mr. Hafiz Suleiman to give a brief overview over that. Over to you, Hafiz. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Sikandar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि जो हम नहीं कर रहे थे या फ्यूचर में करना चाह रहे थे, उसने एकदम से हमें सब कुछ सिखा दिया है। ये बजट भी कुछ ऐसा ही डिजाइन किया गया है जिसमें रिलीफ्स दिए गए हैं उन लोगों को कि जो बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, वी स्टार्ट विद द होटल्स, मोटल्स एंड गेस्ट हाउस, एंड they were charged about 16% firstly, then COVID came and government initiate that they will charge only 0% on their supplies. But now they under COVID-19 situation, government suggested कि ये फिर सिर्फ 5% जो है वो टैक्स पे करेंगे। इनके अंदर कवर किया गया है होटल्स, मोटल्स को, मैरिज हॉल्स और कैटरिंग लॉन्स को, और साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंसेज और इस तरह की जितनी भी आपकी फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर 0% रख दिया गया है। नाउ केम विद द रेस्टोरेंट्स who are charging their bill on debit or credit card will charge 5%, एंड जो उनका कैश चैनल है उसके ऊपर 16% टैक्स ही रिमेन रहेगा। इसी तरह आगे चलते हुए वी टॉक अबाउट लाइक ट्रैवल एजेंट्स, 5% कर दिया गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल केयर, ब्यूटी सैलून्स, इनके लिए भी 5% कर दिया गया, लेकिन इधर एक एक्सेप्शन रखी गई है कि जो एयर कंडीशन नहीं यूज करते उनके लिए 16% रेट ही रहेगा। नाउ 2 more sections are added for ride hailing services, like कुछ कंपनीज जो राइड हेलिंग सर्विसेज की फैसिलिटी ऑफर कर रही हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, बट फ्रॉम दिस फाइनेंस एक्ट दे आर चार्ज 4% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। एज वेल एज इफ यू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो उसके ऊपर भी 5% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट टैक्स अप्लाई कर दिया गया। स्टैम्प एक्ट, ये वो रियल एस्टेट का सेक्टर है जिसको बहुत ही ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, और जो भी स्टैम्प एक्ट के अंदर चेंजेस की गई हैं सारे रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक दे रिड्यूस टू 1 and 2%, as well as this amendment was initiated in April for till June 30, but in this finance act इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है पोस्ट बजट भी। ओके, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट में भी चेंजेस की गई हैं एंड डिस्काउंट पे किया जा रहा है उनके ऊपर जो ई पेमेंट्स पे कर रहे हैं। कोविड-19 ने सोशल डिस्टेंसिंग का हमें सिखाया और हमने उसको अप्लाई किया कि
जो भी ई पेमेंट करेगा उसको हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे. दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव. 5% डिस्काउंट उनको दिया जा रहा है जो ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं. और अगर आप 30 सितंबर से पहले पे करते हैं तो आपको 10% वहां पे भी एनुअल टैक्स के ऊपर डिस्काउंट अलॉट किया जा रहा है. नाउ कम विद द रियल एस्टेट सेक्टर इंसेंटिवाइज. जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए और सर्वाइवल के लिए इसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया. पीआरए में भी इसको रिलीफ किए गए हैं. फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट नॉर्मल को हम 8% इनपुट विदाउट इनपुट टैक्स चार्ज कर रहे थे, 16% विद इनपुट टैक्स था नॉर्मल हाउसिंग स्कीम में. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हम 5% और 16% पे थे, लेकिन अब इनको रिड्यूस करके पर स्क्वायर फीट रेट 50 रुपीज कर दिया गया. सो इफ वी like go through a simple chart, Sikandar, I think yes, this one. So ये देखा जा सकता है कि सेविंग जो है वो बढ़ा दी गई है और इंसेंटिवाइज किया जा रहा है. जैसे कि नॉर्मली 192 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो था वो चार्ज किया जा रहा था विद इनपुट टैक्स, बट अब इतना बड़ा रिलीफ दे दिया गया कि 142 पर स्क्वायर फीट छूट रहा है. इसी तरह हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की तरफ भी देखें तो they give certain discounts like 110 per square feet पे आपको discount मिल रहा है. Now we talk about the entertainment industry. This is the industry which affected the most in COVID-19 situation. The tax rate was 20%. Now it reduced to 5%, and it covers all the cinemas and all entertainment industry as well. And when we talk about the Punjab Motor Vehicle Taxation Act, it gives a lot of discounts for payments through e-payments. Like it also advertise on different channels that if we pay through e-payments, then we get about 25% discount, but PRA give 5% discount on it. As well as if we default in tax payments for previous year and we want to pay that as well, no penalty will be charged in this year. All these reliefs are given to the general public for catering the COVID-19 effects, and it's very good initiative from PRA. Thank you everyone. Over to Umar Zahir.